Hello. I am Praveen Sonamne. You are watching India's most reliable and relevant channel where you get best in class study material and video lectures. Do check the links in the description box. To score 100% marks in physics, first thing you should know is what is physics. तो full marks लाने से पहले उस सब्जेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि वो सब्जेक्ट होता क्या है और वो सब्जेक्ट बाकी सारे सब्जेक्ट से अलग कैसे है, तो आप उस सब्जेक्ट में कैसे फुल मार्क्स ला सकते हो। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि असलियत में फिजिक्स होता क्या है। व्हाट एग्जैक्टली इज द फिजिक्स। तो सरल भाषा में बोलूँ तो फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ, यानी नेचर में जो हो रहा है वो फिजिक्स है। विच लॉ इज गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ अ नेचर इज फिजिक्स। एज सिंपल एज दिस। लगता तो बहुत सिंपल है मगर उतना सिंपल नहीं है। तो आप अगर ये समझ लेंगे कि फिजिक्स सब्जेक्ट ये बाकी सारे सब्जेक्ट से डिफरेंट कैसे है, अलग कैसे है, तो इस फिजिक्स को पढ़ना बहुत ही मज़ेदार होगा। व्हेन आई से फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ, व्हाट डू आई एग्जैक्टली मीन। आई विल लाइक टू टेल यू ऑल अ स्टोरी। या आई नो स्टूडेंट्स एंजॉय दी स्टोरीज। आप इमेजिन करो कि दो राजा है और दोनों जो है शतरंज का यानी कि चेस का खेल खेल रहे हैं। दोनों बड़े शौकीन हैं इस शतरंज के खेल का। तो भाई राजा है, धन है, दौलत है, बहुत सारे नौकर चाकर हैं। तो ये दो राजा जब शतरंज खेलते हैं तो उनका एक वफादार नौकर जो काफ़ी होशियार भी है, उस पर यह जिम्मेदारी है कि जब ये दो राजा शतरंज खेलेंगे तो उनका ख्याल रखना, जैसे कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं, उनको जूस देना है, उनके खान पान का ध्यान रखना है। ये सारी जिम्मेदारी उस नौकर पर है। तो नौकर हर रोज़ उनके पीछे खड़ा है, ये देखता है कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। नाउ लुकिंग देम प्ले चेस, दिस सर्वेंट ऑल्सो फील लाइक लर्निंग दिस गेम। दिस गेम सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। बट एक प्रॉब्लम है, वो राजा से तो नहीं कह सकता है कि मुझे शतरंज सिखाई है, मुझे भी सीखना है। तो वो क्या किया करता था, उन दोनों राजा को शतरंज खेलते वक्त ही यूज्ड टू वॉच देम प्लेइंग चेस एंड ही स्टार्टेड जनरलाइजिंग द स्टेप। सो बाय ऑब्जर्वेशन ही लर्न दैट, उसने ये जान लिया कि घोड़ा ढाई घर चलता है, ऊंट तिरछा चलता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब उसने जो शतरंज सीखा वो देख देख कर सीखा। तो हमारी भी स्टोरी डिफरेंट नहीं है। आवर स्टोरी इज नॉट डिफरेंट आइदर। Why? Because this nature is like a game of chess. This nature came into existence by so-called Big Bang theory, and we have everything in a place. But when this nature was created, some say that God has created the nature. So when this nature was created, nobody prepared this booklet or a manual. सोचिए ज़रा, जब हम टीवी सेट खरीदते हैं, मिक्सर खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, तो उसके साथ उसका मैनुअल आ जाता है। वी गेट अ बुकलेट और अ मैनुअल विच टेल्स अस हाउ टू ऑपरेट दैट गैजेट। इस नेचर में दिन क्यों होता है, रात क्यों होती है, पृथ्वी का आकार कैसे होता है, हाउ आर स्टार, सन, प्लैनेट्स अरेंज इन दिस गैलेक्सी। नोबडी हैज गिवन अस अ मैनुअल कि हाउ दिस थिंग्स ऑपरेट अराउंड अस। And remember, no one has the authority to frame the rules in physics. We can only discover them. हाँ, आप सबको इन्वेंशन और डिस्कवर इसका फ़र्क तो मालूम ही है। इन्वेंशन यानी कुछ नया खोजना, टू फाइंड समथिंग न्यू, एंड डिस्कवर मीन्स पहले से ही कुछ है उसको हम लोग डिस्कवर करते हैं। तो ये लॉज ऑफ नेचर पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं, हम सिर्फ उसको डिस्कवर करते हैं। द ग्रेट साइंटिस्ट लाइक आर्यभट्ट, न्यूटन, आइंस्टाइन or Feynman and others, they have discovered these rules or laws or the principle which govern this universe. But mind you, if this laws does not operate at a particular point or does not go beyond a particular point, तो हम बिल्कुल कतराएंगे नहीं, हम उस लॉ को चेंज कर देंगे। यही फिजिक्स की बात है जो मुझे सबसे अच्छी लगती है। द ग्रेट फिजिसिस्ट न्यूटन, he gave the law of gravitation. But this same law was rediscovered in a different way by the Albert Einstein. We study about the Newton's law in the classic physics, but in the modern physics we use the laws given by the Albert Einstein. दो different scientists, अपने वक्त के दोनों ग्रेट,
लेकिन ग्रेविटी जैसे न्यूटन ने बताई, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने टोटली नए अपने अंदाज से इस ग्रेविटी को हमको एक्सप्लेन किया। हिज टेक वॉज टोटली डिफरेंट। बट नई डिस्कवरी होती है, इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी इंपॉर्टेंट नहीं है, पुरानी का कुछ वैल्यू नहीं है। अरे भाई, पुराने साइंटिस्ट लॉ नहीं देते, वो लोग अगर बेस नहीं रखते तो हम आगे फिजिक्स को कैसे बढ़ा पाते? सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर लर्निंग फिजिक्स। वी ऑल नो दिस फेमस स्टोरी ऑफ न्यूटन सिटिंग अंडर द एप्पल ट्री। जब एप्पल नीचे गिरा तो न्यूटन पागल हो उठा। उसने ये सोचा कि एप्पल नीचे क्यों गिरता है, तो एप्पल आसमान में क्यों नहीं गिरा, वो ज़मीन पर ही क्यों गिरता है। टू फाइंड आउट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, न्यूटन वेंट मैड. He went home and started dropping things. He dropped a spoon, a fork, a glass, a spatula, a wine glass, a brush, a book, a pen, a scissors, a plate, a chair, a baby, himself. Newton went mad, insane to develop 360-degree understanding of the concept called gravitation. He single-handedly gave all the laws pertaining to the gravitation. Here is my first tip, my first secret revealed. Develop 360-degree understanding of the concept. Think conceptually. Think conceptually. It is easier said than done. क्या मतलब होता है think conceptually? It means that give yourself enough time to understand the subject, to understand the topic. जल्दी जल्दी में कोई भी कॉन्सेप्ट ना पढ़िए. If you have ever played a cricket or football or for that matter any other game, so you already are learning physics. तो आपके आसपास जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनको क्लोजली ऑब्जर्व करो, मॉनिटर करो, आपको उसमें ही कई सारे फिजिक्स के लॉ दिखाई देंगे. तो टेक्स्ट बुक ओपन करो, डेफिनेशन पढ़ो, देखो क्या लॉ दिया हुआ है, क्या प्रिंसिपल दिया हुआ है, उसको समझने की कोशिश करो. डोंट रश विद द सिलेबस. टेक योर ओन स्वीट टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. रीड गुड बुक्स, गुड नोट्स, प्रिपेयर योर ओन नोट्स. नथिंग कैन बीट दैट. Along with the notes that you have prepared, also prepare mind maps, flow charts, tree diagrams, and see that will take your preparation to a next level. Tip number 2 or the second secret is develop the friendship with the units. I always believe that the notes prepared by you are the best notes in the world. To maintain uniformity, dimensional consistency, in physics SI units are used. Throughout the world सारे साइंटिस्ट मिलकर SI यूनिट यूज़ करते हैं ताकि एक यूनिफॉर्मिटी, एक समानता रहे, ताकि जब वो अपना वर्क, अपने डिस्कवरीज को एक्सचेंज करे तो एक समानता रहे. अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड यूनिट्स, फिजिक्स में यू हैव MKS यूनिट, CGS यूनिट, FPS यूनिट, कमर्शियल यूनिट, बिगर यूनिट, स्मॉलर यूनिट एंड रिलेशन बिटवीन देम. तो फिजिक्स में काफ़ी सारे यूनिट्स होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसका SI यूनिट के साथ में रिलेशन को याद रखना पड़ता है. It will be highly beneficial in study of physics if you remember 10 raised to 3, 10 raised to 6, 10 raised to 9, 10 raised to 12 as किलो, मेगा, गीगा, टेरा रिस्पेक्टिवली. इसको ज़रूर याद रखना, बहुत काम आएगा. इसके अलावा छोटे यूनिट्स भी होते हैं, जैसे 10 raised to -3, 10 raised to -6, 10 raised to -9, 10 raised to -12. इसे याद रखना, इससे भी बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये बड़े यूनिट्स और छोटे यूनिट्स आर एग्जामिनर्स फेवरेट. एंड कन्वर्जन ऑफ यूनिट from one form to the another form is the another art which you have to learn. Be an artist, learn your art, and see you are marching towards your goal with full speed. I have seen many students lose their marks in this part, that is in units. After understanding the concept, the next thing you have to do is to develop the mastery over the units. Develop the friendship with the units, and that is my second secret. Now, secret number 3, catch up on maths. Some students find it difficult to digest
Why maths in physics? They cannot associate physics with the numbers. They feel that numbers should be reserved for maths. My golden words are, physics is a subject that does not have language. Physics express itself mathematically. हाँ, तो ये हमारे साउथ इंडिया के तुलु लैंग्वेज जैसा है. अगर आप इंडिया के कर्नाटका स्टेट में जाएंगे तो देखेंगे ज़्यादातर लोग तुलु लैंग्वेज में बात करते हैं. बट जब लिखने की बारी आती है तो तुलु लैंग्वेज का कोई स्क्रिप्ट नहीं है. तुलु लैंग्वेज को कन्नड़ा में लिखा जाता है या कन्नड़ा स्क्रिप्ट का यूज़ होता है. तो वैसे ही फिज़िक्स की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, तो वैसे ही फिज़िक्स को मैथ्स इस लैंग्वेज से एक्सप्रेस किया जाता है. आप देखिए, कोई भी डेफिनेशन, कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी लॉ, कैसे उसे एक्सप्रेस करते हैं. तो वी एक्सप्रेस इट इन अ फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द फिजिकल यूनिट, बी इट वर्क, फोर्स, एनर्जी, any law, principle, anything. It is always expressed in a form of a equation. और मैथ्स करना ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा आता है कि आपको कितना कॉन्सेप्ट समझ में आया है. यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है. मुझे अगर कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं है तो मुझसे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे ही नहीं. तो ये एक अच्छा तरीका है ये देखने का कि आपको कॉन्सेप्ट कितनी अच्छी तरह से समझ में आया है. तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त एक यूरेका मोमेंट होता है. वाइल यू आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, यू रियलाइज कि यू आर अंडरस्टैंडिंग अ कॉन्सेप्ट इन अ डिफरेंट वे, इन अ बेटर वे. तो भाई न्यूमेरिकल्स ही पोल खोलने वाली चीज़ होती है. तो हमको फिजिक्स और मैथ्स को एक साथ जोड़ना है. तो बिलीव मी, सॉल्विंग न्यूमेरिकल इज़ वेरी प्रॉफिटेबल क्योंकि ऑलमोस्ट 25% to 30% क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल्स रिलेटेड होते हैं. तो विदाउट न्यूमेरिकल्स भाई बात ही छोड़ दो, आपको कभी फुल मार्क्स या 100% मार्क्स या 100% मार्क्स फिजिक्स में नहीं आएंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ द फॉर्मूले एंड कीप इट हैंडी व्हेन यू आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स. तो मेरा फोर्थ सीक्रेट या कह सकते हो मेरी फोर्थ टिप आप लोगों के लिए ये है कि सिंप्लीफाई द सिचुएशन. फिजिक्स में मोस्टली आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सिचुएशनल बेस होंगे. फिजिक्स में नेचर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है. हियर यू गेट अ क्वेश्चन लाइक, व्हाट इफ अ ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ टावर, इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, इफ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, a light traveling passes from one medium to another medium, a sound hit the obstacle or a cliff, etc., etc., etc. So you have to understand that in physics there will be lot of situation based question in the examination. In fact, your entire question paper will be full of this situation based question. तो आपको फिजिक्स को अंडरस्टैंड करना है उस सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. फाइंड अ गुड बुक विच इज़ फुल ऑफ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन. फाइंड गुड नोट्स वेयर दिस सिचुएशन इज सिंप्लीफाइड प्रॉपरली. इस सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने से, प्रैक्टिस करने से आप लोग देखेंगे कि आपको एग्जामिनेशन में मार्क्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं. और आप सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन अगर अच्छी तरह से लिख पाए तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता. दिस ब्रिंग्स मी टू माई फिफ्थ सीक्रेट, फिफ्थ टिप, दैट इज एक्सप्रेस योर सेल्फ इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज. You have to remember while writing a physics paper, that is, you are not writing any language paper or English paper whereby you are using a flowery language. You are writing everything but you are not using the keywords. तो आप लोग जब भी अपना आंसर लिखेंगे तो उसमें फिजिकल क्वांटिटी आना बहुत ज़रूरी है. वो क्वेश्चन जो है वो किस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर है. आई हैव सीन इन फिजिक्स पेपर व्हेन इट कम्स टू राइटिंग द आंसर, स्टूडेंट्स राइट ब्ला 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 एंड दे एलॉबरेट द आंसर. That is not what is required in physics.
In physics, you have to be specific with your answer. You have to use your keywords properly because teacher is going to give you marks based upon your keywords. I'll give you an example. In one of the physics question paper, there was a question ki why do we see lightning first and hear the thunder afterwards? One student wrote this answer ki location of the eyes, they are located in front of the ear. That is the reason we see lightning first and hear the thunder afterward. That broke me into laughter. Make this a thumb rule that when you write answers in physics, you are going to use keywords. And these keywords will be related to physical quantities. What do you study in physics? You study physical quantity in physics. A quantity which can be measured is a physical quantity. So only those quantities fall in the parameter of physics which can be measured. So make sure that when you write your answer, when you frame your statement, you have to use correct physical quantity. As in this case, the correct physical quantity was a speed or velocity of light and sound. Light travels faster than sound. This was one single statement which was required. But that student wrote the answer which was half page long. And that is not required. So use a specific language, use a proper word and write your answer, even short answer to the point with proper keywords will fetch you good marks. So that is the another tip from me to the students so that they get good marks in the examination. Mind your language. I have seen students leaving derivation as an option. You cannot learn physics without the derivations. Derivations are the integral part of the physics. In case of physics, ratta maro strategy is not going to work. Please don't turn your blind eye towards derivation. If you could derive relation easily, so it can be assumed that you have understood the concept properly and you are going to retain that concept for a longer period of time. So derivation bhaiya is very important. Please don't ignore this. I have seen students who are petrified, paranoid about the derivation, but there is no point to be scared about derivation. Derivation demand only is the time. Don't be in a haste to complete a syllabus. I have seen students turning the page, finding out how many pages are remaining to complete this concept. So go to the concept, take your own sweet time and understand the derivation in full fursat, ekdam aaram se. Because derivation is just the other side of the coin. Without the derivations, you are not going to get good marks. So avoid skipping the derivation. Attack the derivation, understand it and don't stop till you get mastery over it. And finally we come to the last secret or last tip, and this is related to your examination. Till now we have spoken about how to understand the physics. Now we come to a D-Day. That is the examination day. So how do you prepare yourself before the examination and what are do's and don'ts during the examination? To have this time, a great time, you have to plan your strategies properly before the examination. I repeat this proverb many times कि people don't plan to fail, they just fail to plan. So this examination time is a time when you repay yourself, when you redeem yourself. I have seen people saying you make more mistake when you know more. But I refuse to agree because I believe half knowledge is always dangerous. So to get good marks in the examination throughout the year, what you need to do is this. Number 1, read your textbook thoroughly. Your textbook should be like a Bible for you. Second is practice your diagrams. Without diagrams, you are never ever going to get good marks. Solve as many practice papers as possible, preferably last 10 years. Even better if you collect some question papers of some famous schools and colleges and practice them. Top schools and colleges prelim papers are very important. Here I am not going to do marketing of my app, but yes, on my app, PrepWin app, you are going to get all these things. If you see your textbook, you will see that your entire syllabus is divided into different units. Unit related to mechanics, unit related to optics,
But there are certain units which has a single chapter. A unit like modern physics, a unit like sound. You can concentrate on that unit which has a single chapter or less number of chapters. Unit like sound, unit like heat, or unit of a modern physics. This will help you get good marks. With an example, we will try to understand this. Suppose there is a unit of mechanics or optics, whereby roughly say that weightage is around 15 marks. But for this 15 marks, you have to study about 3 to 5 chapters. But a unit of a single chapter carrying 6 to 8 marks can be a profitable task. The last suggestion, nowadays students get a reading time before the examination. Please make a proper use of this reading time. See which questions you are going to attempt, see which questions you are going to leave as an option, and select your option based upon your strengths and your weaknesses. So these were my 7 secrets, 7 tips, 7 suggestions. Use them properly and success will be yours. You will get nothing less than 100% marks. On this note, I am signing off, reminding you to subscribe to my channel and hit that notification button so that you get a notification when I post a video like this. Wish all great things happen to you and you come out in your examination with flying colors. All the best.